Hello class 10th. Today I am going to continue with this chapter absorption by root. Now today's topic is in this chapter absorption of water by roots. Absorption of water by roots. Okay. As you know, root is by mean of root here. Okay, absorption of water by root is by mean of the root here. As you know, अंदर का concentration कैसा होता है, high होता है. By this diagram, this is xylem vessel. Okay, this is xylem vessel, and this one cortex region. Okay, and this one root hairs. ये क्या है? Root hairs है. As you know, concentration अंदर का कैसा होता है, inside the root hair is high always. Okay. This is xylem. Xylem vessels or vessels. And this one is epidermis. ये क्या है? This is epidermis. This is epidermis. And this one is soil particle. ये क्या है यहाँ पे round? ये सारे, that is soil particle. Soil particles. This one root here. Okay. And here space. This is vacuole. This is vacuole. The space inside the epidermis. That is vacuole. Okay, film of soil water around particle. Okay, यहाँ पे जो soil है इसके किनारे किनारे इट इज अ film of water. ठीक है, soil particle के किनारे क्या है? That is film of water. This is film of water. ठीक है, water molecules कहाँ अटैच है? फिल्म पूरी water की एक लेयर से. Suppose like this. This is suppose soil particle है, उसके किनारे किनारे ऐसे water अटैच है. This is film of water. Okay, now root as you know, absorption of water by root hair only. Okay, and by means a root hair contains the cell sap which has a higher concentration. इसके अंदर जो cell sap है that is cell sap कैसा है? हाई कंसंट्रेशन का है. हाई concentration. Okay, and of salt as compared to the outside soil water. This different set of osmosis and the outside water diffuses into the root hair. From the cell bearing root hair, water continues to pass adjoining cell one after another and finally enter the xylem vessel. The turgidity acquired by the cell in the process also helps to push the water upward to the xylem vessel. What happened here? यहाँ पे अंदर का सेल का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है सेल सैप का, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? लो है. ओके, तो जो वाटर है वो मूव करेगा थ्रू दिस रूट हेयर और अंदर आएगा वाटर एंड इसके थ्रू यहाँ से कहाँ जाएगा? दिस एपिडर्मिस एंड थ्रू जाइलम वेसल. एंड जाइलम वेसल इस वाटर को क्या करेगा? अपवर्ड कंडक्शन करेगा. ओके, दिस इज द हाउ टू वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट एंड कंडक्शन अकर. By this diagram you can show. Okay, this is the way of the water conduction. This from soil film to cell sap and cell sap to adjacent cell and adjacent cell to xylem vessel. Now absorption of mineral element. This is about the water. What about the mineral element? From the soil involves active transport. Active transport क्या होता है? Suppose ये यहाँ पे मिनरल्स हैं लेकिन दे आर नॉट एबल टू गो इनसाइड. ठीक है, ये अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को यूज करेंगे एट द फॉर्म ऑफ एटीपी जो इनके अंदर है, और ये पुश करेंगे अपने आप को थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ओके, एंड एटीपी इज यूज्ड हियर इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. Okay, from the soil, mineral may also be absorbed as iron rather than as salt. The dilute solution of water and mineral salt absorbed from the soil by the root hair
can be used for food manufacture in the leaf only if it can travel up to the highest point of the plant. This upward flow occurs through the xylem only. ठीक है, upward flow through the xylem. Now next one, that is experiment on absorption and conduction of water in the plant. Absorption and conduction of water, experiments on absorption and conduction of water in the plants. Absorption, experiment on absorption and conduction of water in the plant. First experiment to show that root absorb water. Experiment number 1 in your book, that is to show that root absorb water. How you prove? To show that roots absorb water. How you prove that? First of all, take a test tube A and B. This is test tube A and this is test tube B. As you know, one is experimental and second one is control. Situations are same. This is water. Here also use water. ओके, यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल रहे हैं. वाई ऑयल? टू प्रिवेंट द एवोपरेशन. ठीक है, जो वाटर का लॉस होगा वो थ्रू एवोपरेशन नहीं होगा. दैट इज वी यूज ऑयल हेयर. ओके, नाउ टेक वन यंग लीफी प्लांट सच एज balsam also with root. And as you know, कंट्रोल में हम प्लांट को नहीं लेंगे ना, कंपेयर करेंगे दैट वाटर लेवल का. ओके, नाउ दिस वन इज थर्ड वन. ले नहीं रहे हैं, सी आप, दिस वन इज ए. आफ्टर अ फ्यू आवर व्हाट आर द चेंजेस? ओके, वाटर लेवल यहाँ पे क्या होगा? आफ्टर फ्यू आवर वाटर लेवल जो ए का है वो नीचे चला जाएगा. वाई? लेकिन ऑयल लेयर है. ऑयल लेयर क्या करती है? टू प्रिवेंट द एवोपरेशन. ठीक है, तो वाटर लेवल लेकिन नीचे है. क्यों है नीचे? क्योंकि रूट वाटर को अब्जॉर्ब कर रही है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है. ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है एंड वाटर लेवल क्या जाएगा? डाउन. दिस इज रूटेड प्लांट. सेम प्लांट. दिस इज ए. Now what happened? Take a test tube A and filled with water. Put out a young leafy plant such as balsam from the soil, and with its root in that. In roots तभी तो हम प्रूव करेंगे. अगर रूट नहीं होगा, ट्विग लेंगे, तो how you prove कि root absorbs water. Insert the root into the test tube soon. Put a few drop of oil in the test tube to prevent the loss of water by evaporation. Mark the level of water. Set up a similar test tube B but without a plant. Is the same. Okay. And in a day or two, you will find the level of water in the test tube A falls. See here, यहाँ पे ये level था. Now it falls after a few days, but not in B. B is remain same. Why? Proving that water lost in test tube by absorbed by the roots. यानी रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस हो रहा है, तो वाटर का लेवल धीरे धीरे कम हो जाएगा. पर यहाँ पे प्लांट है नहीं, तो यहाँ पे रूट कोई वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, ट्रांसपिरेशन हो नहीं रहा है. एवोपरेशन के थ्रू वाटर इस कंडीशन में एवोपरेट नहीं होगा क्योंकि देयर इज अ ऑयल फिल्म ऑल्सो. ओके, नाउ एक्सपेरिमेंट 2 to show that water is conducted upward through xylem. Water is conducted. Experiment number 2. Because I am explaining here this type of question, because 5 marks question will come from this type of experiment. To show that
water is conducted upwards through the xylem, upwards through the xylem, upwards through the xylem. Take a medium sized young balsam plant is uprooted, निकाल लेते हैं, and washed and placed in a beaker containing a stain eosin. What we do, just take a beaker and इसमें हम एक stain डालेंगे, पिंक कलर का stain होता है, that is eosin. और इसमें हमने बाल्सम प्लांट भी डाल दिया है पूरा, ठीक है, एंड दिस इज अपरूट, पूरा रूट के समेत निकाल लिया बाल्सम प्लांट फ्रॉम द सॉइल. ओके, द रूट शुड बी कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन. रूट पूरा सबमर्ज्ड होना चाहिए इन द सॉल्यूशन eosin. Okay, and this setup was kept aside about 3 to 4 hours, and at the end of this period the plant is taken out of the solution and washed in tap. Then the transfer section of the root stem. Now see here, यहाँ पे एक root stem आप लेंगे and now cut it from here, and then you see in this, यहाँ पे जो white xylem vessels होंगी, it becomes pink. क्यों हो गई है पिंक कलर की? Due to this eosin. Okay, at the end of this period the plant is taken out of the solution and washed in tap water. Then a transfer section of the root stem and leaves is made and examined in the microscope. The xylem vessel will appear distinct from the rest because it will be stained red dye or by the dye, by the dye. Okay, vascular bundles in the stem, roof and stalks and leaf vein are the continuous and from an unbroken system of tubes. Collectively they form the transport system throughout the entire plant. Water and salt travel upward mainly in the xylem. ठीक है, water and salt किससे travel करते हैं? Water and salt किसके थ्रू अपवर्ड जाएंगे? दैट इज थ्रू xylem, अपवर्ड कंडक्शन होगा. एंड फूड सब्सटेंस ट्रेवल थ्रू phloem by up and down both. Okay, water and salts travel upward mainly in the xylem, and food substance travel up and down in the phloem. Okay.